Hello everyone, today I'm going to show you the some formulas of the Excel, like using fill handle, how to calculate the percentage, how to calculate the total number in the only one step, not to calculate other numbers. So let's start. And these things we will make in a report card of some friends like you. So we will open a blank workbook. So open a black workbook. This is an online Excel I'm using, and so it is taking a time because it is the home version of the Excel. You can use it. I made a video on Excel. So let's wait. Excel heading is came. You can see bookwork. Workbook is a file in the MS Excel, and you can see here the written as sheet 1. Sheet are the pages in the Excel. Okay, so let it the completely it can load. Then we will start our formula. Okay, let it load. Firstly, we will write the headings. Firstly, write name and leave one column and write subject name like Hindi, and then write maths, then type English, and then three headings are done. And here you can type total. Okay, and now here you can type percentage, percentage. Okay, so now we will come to the cell of the row 3. Okay. A3 cell. Okay. Now type the name. हम नेम टाइप करेंगे. उसके बाद हिंदी के नीचे मार्क्स हिंदी का टाइप करेंगे. Like we are getting marks in the 100. So type according to you. I have mistake happened here. Go to English and done. Now, like wherever knowledge. So I'm type I'm typing his names. And now other A7 column. See, A7 cell it is called. A cell is made by the intersection of the column and the row. Row are the horizontal, like row 1, it is gone here, and row 2, row 3. Columns are column A, column B, column C. They are vertical. Okay, so another name I will type. Oh, by mistake, I have go to this cell. Hmm, And then now I'm going to show you how to make the total. Okay, go on the total column. You have to type equal. See in your keyboard, type equal. Okay, we are making the formula. Now, after typing the equal, click on your Hindi column cell. Okay, here's come C3. And now shift and plus.
and now click on this number, and then again shift and plus you have to type, and again this. Now you have to only do the thing, click enter. See, the total has came. So again go on to this cell, and you can see the fill handle has came, and now drag it to the Arnav section. Okay, you can see the total numbers has came with this zero, is this the blank line. Okay, you can remove it, click backspace, and then click backspace. Okay, and now we will remove. Percentage formula is a bit different, and not a well, it is only bit different, but it is a bit than the total. Okay, so it, again click equal, and then total number. Okay, you can see I3 has came. Everything is displayed in the formula tab. Okay, this is came, and now you can and now if you have the keyboard in the 8 number key, you will get uh, you will get another sign in the Excel. It is called multiple sign. So shift and that sign, and now 100, type 100, and now you will see जितने नंबर है उतना नंबर टाइप करते हैं। ये जैसे कि ये 1 2 3 3 है। अब स्लैश लगाइए, ये स्लैश, ठीक है। अब 300, ओके। अब यहाँ से एंटर दबा सकते हैं, और चाहे तो ये फॉर्मूला बार बार देखिए, यहाँ टिक दबा दीजिए। ओके, यू कैन सी परसेंटेज स्केल, फिर से वही फिल हैंडल, ये फिल हैंडल है, इसको हैंडल से इसको ड्रैग कर देंगे, ऑटोमेटिकली ही सबकी परसेंटेज है। अब 0 है, हम 0 को बैक स्पेस कर देंगे। ओके, तो यू कैन सी हमारा रिपोर्ट कार्ड रेडी है। नेम हेडिंग, उसके बाद सब्जेक्ट, और क्या हमने नेम लिखे, टोटल नंबर की हमने ऑटोमेटिकली किया। ओके, अब मैं आपको एक और चीज बताऊंगा। ओके, हम न्यू रो में आ गए। ओके, सो लाइक यू हैव to type Monday, another use of the fill handle. Okay, Monday. We will type on Monday. Okay, and now again go to fill handle and drag it to the 7 number, like 1 2 3 4 5 6 7 till 20. You can see automatically all days is skip: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Okay, and now if you want to type 1 2 3 to any number, like हमने 1 टाइप किया, हम फिल हैंडल पे गए, हमने इसको टाइप करके सामने, तो कुछ नहीं आएगा, सिर्फ 1 आएगा। ओके, इसका तरीका मैं बताता हूँ। 1 टाइप करेंगे, इसके नीचे के सेल में आएंगे, 2 टाइप करेंगे, तो फिर इसके नीचे के सेल आएंगे, 3 टाइप करेंगे। ओके, हम इतना गए, हमने इन तीनों को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये अब हमारा एक सेल है। अब हम फिल हैंडल को ड्रैग करके जितनी चाहे उतनी नीचे तक लाएंगे। तो दिक्कत होगी लगता है, 1 मिनट, 1 2 3। और नो, कोई दिक्कत हो रही है। 1 मिनट, 1 फिर 2 1 then 2 then 3। Okay, now select it, now select
अब अगर कोई दिक्कत होती है तो नो अभी भी फिर से भरनी है। मुझे लगता है ये फीचर्स काम नहीं कर रहा है अभी इस वक्त। ओके कोई बात नहीं। अब मैं इसको एक बार फिर से एक नया वीडियो बनाऊंगी इस पे। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ मंथ्स कैसे टाइप करते हैं। जनवरी हमने टाइप किया, पहला मंथ टाइप कर दो, जनवरी। ओके ओके, फिर हैंडल से हम इसको ड्रैग कर देंगे, नवंबर तक के सारे महीने आ गए। और उसके बाद हम दिसंबर ये आ जाएगा। ओके देखो, हम एक बार 1 2 3 का फॉर्मूला एक बार फिर से टाइप करेंगे। 2 3। कोई दिक्कत हो रही है इसमें, इस एक्सेल में अभी कोई दिक्कत है इसलिए नहीं आ रहा है। हम आपको इनके टैब्स भी दिखा देता हूँ। और इनके टैब में हम चार्ट्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, टेबल्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला है वो मैं आपको बताता हूँ। हम फिर से हमारे रिपोर्ट कार्ड वाले साइड पे आएंगे, नेम पे लेके फिल हैंडल ड्रैग करेंगे और ये पूरा एरिया सेलेक्ट कर लेंगे। 1 मिनट, ये लेंगे हम पूरा एरिया सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, यहाँ पे ये आप सब देखेंगे लेके आ रहा बॉर्डर। यहाँ से हम अपने इसको एक नया टाइप दे सकते हैं। ओके, तो हमें कुछ जो है, मुझे थिक आउटसाइड बॉर्डर्स चाहिए, मैंने किया और मेरे थिक आउटसाइड बॉर्डर आ गए। अब मुझे अंदर के बॉर्डर पे चाहिए, हम फिर से वही सिलेक्शन करेंगे, बॉर्डर्स पे जाएंगे, आउटसाइड बॉर्डर्स हैं, टैब बॉर्डर्स हैं, हम इनसाइड बॉर्डर्स को करेंगे। देखिए हमारे इनसाइड बॉर्डर्स भी आ गए हैं। अब ये एक रिपोर्ट कार्ड है। अब मुझे पता चल गया कि 1 वाला हमारे साइड क्यों नहीं आएगा। हम एक बार फिर से उसको ट्राई करेंगे, 1 देन 2 देन 3। ओके, अब हमने उसको सेलेक्ट किया, अब हम उसको लेके गए। ओके, देखा 1 2 3। असल में मैंने उसमें गलती कर दी थी, हम उसको फिल हैंडल से ड्रैग कर रहे थे। सेलेक्ट जब हम 1 2 3 को एक साथ सेलेक्ट करना था, फिल हैंडल से नहीं ड्रैग करना था, मैं उसको फिल हैंडल से ड्रैग कर रहा था। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब नाउ एंड share